हाय एवरीवन वेलकम टू माय चैनल। तो यही वीडियो में देखा हाइड्रोस्फीयर +3 फास्ट इयर इभीएस बा एनवायरमेंटल स्टडीज हाइड्रोस्फीयर उपर डिस्कसन करिया। मु पूर्वर अटमोस्फीयर व्हाट इज इन्वायरमेंट इन्वायरमेंट केतार भाग कराई क्लासिफिकेशन ऑफ इन्वायरमेंट कौन नेचुरल इन्वायरमेंट कौन आर्टिफिशियल इन्वायरमेंट कौन बा ह्यूमन बा मेन इन्वायरमेंट कौन आगुरी ऑलरेडी वीडियो बन सारी। जदि आपण मैंने देखी ना तो चैनल को जाए देखिपारे। आ वीडियो आगे मुझे आपको कहबी जे यार पीडीएफ आपने केमी पाइपर। तो चलो स्टार्ट करिए। हाइड्रोस्फीयर माने कौन? हाइड्रोस्फीयर ऑल लिक्विड वाटर प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ कन्स्टिट्यूट द हाइड्रोस्फीयर। माने जी सब लिक्विड वाटर प्रेजेंट कौन कर हाइड्रोस्फीयर सब ये कर। वाटर ऑफ द हाइड्रोस्फीयर इंक्लूड्स सॉल्ट वाटर, फ्रेश वाटर, atmospheric moisture, precipitation and soil water in this sphere 70% water and 30% land. नेक्स्ट देखिए वाटर 90-70% सल्टी वाटर एंड 3% फ्रेश वाटर। मैंने आम जो वाटर अच्छी 97% कौन सल्टी माने लुणिया लवण जल जहाँ समुद्र में देखा पाते आ 3% फ्रेश वाटर जहाँकि कौन कौटे नलकूप पंड अच्छी गोटे रिभर अच्छी गोटे लेक्स अच्छी यही भाव से रही जाइए। नेक्स्ट देखिए फर्म वाटर फर्म कौन स्टेबल जो फर्म 3% जो अच्छी वाटर फ्रेश वाटरटा तार स्टेबल को प्रकार लिक्विड फर्म अच्छी भैपोर फर्म अच्छे सॉलिड फर्म अच्छी। तो ये सब डिटेल्स देखिए। लिक्विड फर्म कौन परीक्षा ये इंपोर्टाट ये टू मार्क आसपे कि ये आसपे कि ये आसपे तापर कि एमसीक्यू आसपे जे के परसेंट पानी वाटर कौन सल्टी वाटर के फ्रेश वाटर के। तो वीडियो आप बहुत बहुत इंपोर्टाट। तो आगे चलो देखिए लिक्विड फर्म मैंने कौन ए लार्ज protection of the total water on earth is present in liquid form. Oceans, seas, lakes, river, rain and groundwater are the main source of the liquid form। माने हम बुझी होची ये कथा किसी कष्ट नहीं। तब नेक्स्ट टाइम देखिबा 97% इज सी माने समुद्र हिसाब रे अछि 3% वाटर आर्कटिक एंड आंटार्कटिक ओशंस एंड द रिवर लेक्स एंड पॉन्ड्स एंड ये हेची। तो कौन है कौन लिक्विड फॉर्म जो रही 100% जो लिक्विड फॉर्म ना 97% कौन ना सी रही है। जो बाकी रही जो सब आम सब ग्लेसीयर अच्छी से अच्छे आंटार्कटिक ओशन से अच्छी तापर रिभर्स अच्छी लेक्स अच्छी पंड अच्छी आउ अंडरग्राउंड सब रही जो कूँ खोलिले जो पानी पाँच। नेक्स्ट देखिए वेपोर फॉर्म। वेपोर फॉर्म कौन ना वाटर इज प्रेजेंट इन वेपोर फॉर्म मेनली इन दिस स्पीयर वाट माने ये जो स्पीयर रे हाइड्रोस्फीयर वाटर कौन हो बाष्पीभवन भाव से भेपुर हो वाटर भेपुर फॉर्म अच्छी। वाटर भेपुर इज भिजिबल फॉग एंड क्लाउड्स द मोस्ट कॉमन एग्जांपल ऑफ द वेपोर स्ट्रीम। माने भेपुर कौन हो भिजिबल जो आम सकाल कुहुड़ी पड़ी से आम किसी माने जल पाँच से वाटर से भाई प्रकार भाव यही स्पीयर हाइड्रोस्फीयर रही। नेक्स्ट टाइम देखिए सॉइल फॉर्म माने सॉलिड फॉर्म रे वाटर की भाई रही ऑन अर्थ। Solid form on Earth, water is found in solid form as ice caps, glaciers, snow, etc. A very small quantity of water on Earth, the solid form of water accounts from the only approximately 2% of the total water. Glaciers contain almost 68% of fresh water, which makes them the main source of usable water. Although most of glacial lakes are in very inhospitable। माने कौन ना सॉलिड फॉर्म जो वाटर अच्छी को प्रकार होची कि आइस कैप्स ग्लेसियर स्नो यही भाव से रही है। तार कौन ना 2% कौन हो ना टोटाल वाटर कौन है ग्लेसियर कंटेन्स विथ ऑलमोस्ट 68% वाटर ऑफ फ्रेश वाटर व्हिच मेक्स देम द मेन सोर्स ऑफ यूजेबल वाटर। नेक्स्ट टाइम देखिबा आइस बीइंग फ्रोजन वाटर इज पार्ट ऑफ द हाइड्रोस्फीयर but it is given its own name cryosphere and it is also the frozen part of hydrosphere called cryosphere। cryosphere माने कौन टेम्परेचर लो आम आपको डिस्कसन करिया आगो डिस्कसन करिया। फॉर्चन पार्ट ऑफ हाइड्रोस्फीयर इज मेड ऑफ आइस ग्लेशियर्स। तो क्रायोस्फीयर माने कौन तो क्रायोस्फीयर हूँ द टर्म क्रायोस्फीयर कम्स फ्रॉम द ग्रीक वर्ड क्रेयोस क्रियोस which means cold। ताने क्रायोस्फीयर हूँ गोटे ग्रीक वर्ड क्रियोस राशि अच्छी जार अर्थ हूँ कोल्ड में ठंडा। आइस स्नो एंड ग्लेशियर्स ऑन लैंड आर वन पार्ट क्रायोस्फीयर। ये सब कौन आइस स्नो एंड ग्लेशियर गोटे पार्ट हूँ क्रायोस्फीयर। द अदर पार्ट ऑफ द क्रायोस्फीयर इज आइस स्ट्रैटा इज फाउंड इन वाटर। दिस इंक्लूड्स फ्रोजन पार्ट्स ऑफ द ओशन सच एज वाटर सराउंडिंग अंटार्कटिका एंड द आर्टिक। It also includes frozen rivers and lakes
which mainly occur in polar areas. The components of the cryosphere play an important role in the Earth's climate. तो Earth's climate cryosphere ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ important play କରୁଛି ବା ରୋଲ୍ ନିଭାଉଛି। ନେକ୍ସଟ ଟାଇମ୍ ଦେଖିବା वाटर साइकिल। तो वाटर साइकिल कौन हाइड्रोस्फीयर गोटे ये से गोटे इंपोर्टेंट वाटर साइकिल। तो वाटर साइकिल कौन ना वाटर साइकिल इज also known as the hydrologic cycle. Earth has been recycling for over 4 billion years. The water cycle is also known a way that the water cycle is a way that water moves all around the earth. माने कौन वाटर साइकिल जो होची ताको वाटर साइकिल गोटे मूव होची प्रथम देखिए आम आपको बाष्पीभवन सब अच्छी इट नेभर स्टॉप माने आके बंद नुह इट डज नॉट हैव ए बिगिनिंग और लैंड एंड इट्स लाइक ए साइकिल माने एटा केवल बंद होनी एटा गोटे चक्र भाबे पूर्ण भान कौन सी चलुची द साइकिल ऑफ प्रोसेसेस बाय व्हिच वाटर सर्कुलर्स बिटवीन द Earth's ocean, atmosphere and land, involving participants as the rain and snow during in the streams and rivers, and the return to the atmosphere by evaporation and transpiration. तो वाटर साइकिल हम देखिले तो वाटर साइकिल कौन चक्र जो रही जलचक्र तार चार्टा भाग अच्छी चार्टा भाग कौन ना देर आर 4 मेन पार्ट्स टू द वाटर साइकिल चार्टी पूरा मेन पार्ट्स अच्छी कौन कौन इभापोरेशन कंजर्वेशन प्रेसिपिटेशन कलेक्शन बा स्टोरेज। तो फास्ट टाइम देखिए इन्भापोरेशन माने कौन इन्भापोरेशन इज व्हेन द सन व्हील्स ऑफ वाटर इन रिवर्स और लेक्स और द ओशन एंड टर्न इनटू वेपोर और स्टीम। तो ये इन्भापोरेशन द वाटर वेपोर और स्टीम लीव्स द रिवर लेक और ओशन एंड गोज इनटू द एयर। ट्रांसपिरेशन गिव्स द इवापोरेशन ए बीट ऑफ ए लेड इन गेटिंग द वाटर वेपोर बैक अप इनटू एयर। तो ये कौन इवापोरेशन। नेक्स्ट टाइम देखिबा कन्वेक्शन। तो कन्वेक्शन कौन ना कन्वेक्शन इन द वाटर साइकिल इज व्हेन द एयर नियर द सरफेस इज heated then rises taking heat with it water vapor in the air gets cold and charged back in liquid form clouds. This is called concentrations। तो कॉन्सेंट्रेशन होगा। नेक्स्ट टाइम देखिए प्रेसिपिटेशंस। तो प्रेसिपिटेशन को मैंने कौन ना precipitations occurs when so much has water has concentrated that the air content hold it anymore. The clouds get heavily and water falls back to the earth in the form of rain, hail, sleet or snow। तो ये कौन प्रिसिपिटेशन। नेक्स्ट आते हैं कलेक्शन बा स्टोरेज। तो ये कौन जलचक्र लास्ट पार्ट। तो लास्ट पार्ट कौन ए लॉट ऑफ द अर्थ वाटर डज नॉट टेक पार्ट इन द वाटर साइकिल वेरी often. Much of it is stored the earth's storage water in a number of places. The ocean is the largest storage of water. Around 96% of the earth's water is stored in the ocean, where we can drink the salty ocean water. So fortunately for us, fresh water is also stored in lakes, glaciers, snow caps and below the ground in the groundwater storage। तो ये कौन हाइड्रोस्फीयर डिस्कसन करछि। तो यार आप पीडीएफ किन पाइपर टेलीग्राम लिंक रे अच्छी डिस्क्रिप्शन लिंक रे अच्छी आप देखो तार कमेंट जल्दी मुझे तार पीडीएफ सागे सागे पठेदेवी। नेक्स्ट टाइम देखिए आर नेक्स्ट वीडियो लिथोस्फीयर देखा। तो मुझे आगू इन्वायरमेंटल स्टडीज वीडियो आनी हाँ जो मैंने ओडिया मीडियम से अलरेडी आगुरी वीडियो बन सारी आपण मैंने चैनल को जाए देखिपारे। तो आगू नेक्स्ट आम देखिए लिथोस्फीयर कौन। तो थैंक यू टू ऑल फॉर वाचिंग दिस वीडियो। यहीपरी वीडियो पाइबा चैनल जोड़ी।